भास्कर ने बोला कि there is this I mean सीमा मैम is in town, दिल्ली में है वो, तो why don't you go and meet her once? Yeah. I thought कि ये मेरे लिए opportunity, चाहे film करूँ ना करूँ, Yeah, at you least hardly उनसे get a मिलते chance रहो, to yeah. meet someone like Seema Vishwas ma'am. Hi guys, welcome back to another episode of Say What with Shreya. We are back with some fun chit chat. I'm your host Shreya, and today we are in candid conversation with an artist who is an actor, anchor, musician, and also an environmentalist. Interesting, right? Please welcome Mr. Arghadeep Barua. कैसे हैं? ठीक हूँ, बैठिए प्लीज. How are you? How is life lately? Lately, life has been good, yeah. I don't know. I mean, universe has been kind, like always. That's nice. Yeah. So far it's good. फिलहाल तो ठीक ही लग रहा है. No rush, as such. So it's good. Yeah. What about you? Good, good. Great. We are seeing you live anchoring, acting. You're an amazing singer, and we want to know who you are according to you. ये क्वेश्चन कभी कभार मैं खुद से भी पूछता हूँ. बट अगर सिंपल वर्ड्स में मुझे कहना हो तो आई एम बेसिकली समवन हु लाइक्स कलेक्टिंग स्टोरीज इन वट एवर फॉर्म पॉसिबल एंड a storyteller whose primary medium at this point of time is music and filmmaking. Oh, you're into filmmaking as well. Yeah, because that's what I have done as far as my education is concerned. Oh. So acting तो accident भी नहीं कह सकता अभी, क्योंकि मैं पहले अब से पहले जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए वहाँ पे मैंने एक्सीडेंट ही कहा हुआ है, लेकिन फिर मैंने एक दोस्त के साथ बात किया, देन पता चला कि यूनिवर्स का भी अपना कुछ ना कुछ प्लान होता है. Right. सो मे बी कहीं पे कुछ कॉन्स्पिरेसी हुआ था जिसके वजह से मे बी आई एंड अप बिकमिंग एन एक्टर ऑल्सो. सो शायद एक्सीडेंट नहीं है. Nice. So you write music as well, like lyrics and all. You compose as well. I mean, we have a band called Bottle Rockets India. Yeah. So for that, I don't want to take all the credit because it's a collective process. So as a collective मिलके हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे कभी कभार मैं musically भी contribute करता हूँ, कभी कभी lyrically भी contribute करता, तो उस लिहाज से देखा जाए तो yes, I also write. Wow. Would you mind singing 2 lines of your favorite song that you have composed yourself? Original song. There, I mean, every song is like your baby, no? Yeah, I'm sure. So yeah, sometimes एक particular गाने को pick करना is difficult. But there is this song called Bukute, which I have, which is been written by one of our very dear friend. His name is Saagar, who in fact also played the character of Ilyas Da in the movie Amis. Oh. And so this song is very close to our heart for the very fact that this song also talks about self-realization and a lot of things that we connect to. So 2 पंक्तियाँ इस गाने के मैं कोशिश करता हूँ. Please. Bukute hiku lire pak meri ay apunore batahi kune খুলি দিলে পদুলিৰ সিপাৰে ৰৈ থকা ফাগুনে আহি আজি মোক কব খোজে কানে কানে উশাহৰে সুবাসত হৰে হাসি ৰখা মনৰে আলসুৱা হেঁপাহ. Just like that. Wow, beautiful voice you have. But humble.
But yeah, but one of the, I mean, key element of this song is also the guitar, and it's a plug-in based song. So I'm missing a guitarist. So वो रहता तो no चार चांद आ जाते शायद. I'm sure. Tell us more about your band, Bottle Rockets. How did it start, and how did this happen? All of this. Well, अभी जो current lineup है वो it's around 3 years old. Oh. So Bottle Rockets initially जिन members के साथ शुरू हुआ था, वो क्या हुआ, that band became Fellow Swimmers. Oh. And Fellow Swimmers is a post-rock kind of a band जिसमें अरुणव दाम अपने एक दोस्त है, then there is Hengulda, and rest of the members are जो current Bottle Rockets के lineup है वही है. लेकिन फिर क्या हुआ कि Bottle Rockets हम लोग कुछ दिनों तक चलाए, फिर कुछ गैप आ गया था, and then it became Fellow Swimmers, and then we did a show called Forkal. But then again Fellow Swimmers के जो members थे, तो primary core members थे, वो अलग अलग जगहों में रहते हैं. अच्छा. So one of the members stays in Bangalore. The other member is a person who is into a lot of social work, and also how to say, he's into working with villagers and empowering them to towards a more sustainable kind of living and livelihood. So वो भी wow. Yeah, so he's into he does this show called Kholedai, and he's working in a place called Paddington, amazing village. कभी अगर आप लोगों को मौका मिले तो जाओ, वो it's very close to Kalimpong. अच्छा. So वहाँ के कुछ गाँव, yeah, it's not exactly Sikkim, अभी तो North Bengal में पड़ता है, but they're also working in Sikkim. So since ये दो core member अलग अलग जगहों में placed हैं, तो हम लोग सोचे कि why not let's continue with the initial name of the band that actually started the whole journey. तो उसी तरह से Bottle Rockets की शुरुआत हुई, and now the members are Riaz guitars पे हैं, Neelanov drums, Mrinal is in bass, Rian is in violin, and we also have a member who keeps coming and going. His name is Sunny, who is also very instrumental in some of our composition. जैसे आप पूछे थे ना कि हमारे गाने कैसे हम लोग लिखते हैं वगैरह, अभी मेरी contribution क्या है, तो I think he's also one of the important contributors of the band. Yeah. Okay, wow. So you're a band of 5-6 Yeah, predominantly 5 members band, yeah. but we also play 6-piece. And we, as a band, don't restrict ourselves to any kind of a particular genre, and it's very fluid in nature, so it keeps deviating from here and there. It's fluid in nature, like music-wise, or do you are you into social work as well, like help? Well, so as a band, our primary source of inspiration is nature. So एक उसमें तो responsibility आ ही जाती है कि हमारे गीतों में भी आपको झलक मिलेगी nature की, not just in the form of metaphors, but also कभी कभार जैसे हम लोग ने recently we did a collaboration with this artist named Aughat. He's a rapper. So we've done a song on waste management for an NGO called Midway Journey. So that's a song जहाँ पे हम लोग ने the power of collective effort, और कैसे हम लोग जो प्लास्टिक की जो menace है उसको कैसे हम लोग in a way solve ना सही लेकिन manage कर सकते हैं. So वो जैसे गाना है, that's predominantly a very क्या बोलते हैं social message वाली एक गाना है. Similarly, we worked with an NGO called The Ant, the Northeast Action Trust. So they are into child rights and education. वो women empowerment में भी they work, but जो गाना हम लोग ने किया था वो predominantly is about child rights and how in our decision making, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी जो भविष्य है, future, बच्चे हमारे future हैं, लेकिन we hardly give them chance in the decision making process. Makes sense, yeah. तो उन सब चीज़ों को कैसे हम लोग और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार के जो thoughts हैं
हाँ, तो उसी को लेके एक गाना है ये. उनकी एक प्रोजेक्ट भी आए थे एनरिच बोल के, where they are trying to empower the children and in a way उन लोग को इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग में, चाहे पंचायत लेवल में ही हो या फिर मतलब ऊपर के लेवल में भी. सो उसी के लिए हम लोग ने गाना बनाया था. एंड प्रिडोमिनेंटली द बैंड इज़ ऑल्सो ए वेरी जाजाबोरी काइंड ऑफ अ बैंड. हमारी जो थॉट प्रोसेस है इज़ वेरी बोहेमियन इन नेचर. सो उन सब चीज़ों को भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने गानों में. सो या देयर इज नेचर प्रिडोमिनेंटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर म्यूजिक. Wow. So you collaborate with a lot of NGOs. Yes. That's nice. Really nice. Thank you. You just talked about Jaja Boy. What does it mean? That's also your Insta handle, right? Yeah. So Jaja Boy को आप wanderer भी बोल सकते हैं या bohemian भी बोल सकते हैं. So yeah, that's the basic idea because that's the energy that I very much connect to, and for the past few years I have always been in a move kind of a phase. जहाँ पे बस घूम ही रहा हूँ. So travel has been a very important part of my understanding, my learnings and unlearnings. So इसीलिए Jaja Boy becomes a very important. Nice. You travel solo? Yes, I make sure कि साल में एक बार तो I go solo. Wow. Yeah. Nice. You also recently hosted Praxony Awards. Share some snippets from the big night. पहले तो मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊँगा. कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, I don't know why. जैसे एक्टिंग के टाइम पे भी मुझे लग रहा था कि शायद हो नहीं पाएगा. फिर जब अक्षता एंड मौसमी बा ने कहा कि यू हैव टू होस्ट, सो तब भी मुझे लगा कि शायद हो नहीं पाएगा बिकॉज it's a responsibility and especially in an event like Praxony Awards जहाँ पे इतने लोग हैं, इतनी गरिमा है. इवेंट की भी अपनी एक गरिमा है, अपनी एक पोजीशन है, एक स्टेटस है. तो all of a sudden because if you are not into it, because मैं स्कूल में भी कभी एंकरिंग नहीं की हुई है. अच्छा. So वो पहली बार थी. बिल्कुल. तो एक बेसिक ओरिएंटेशन की तो जरूरत होती है ना. सो एटलीस्ट टू गेन दैट कॉन्फिडेंस कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. सो यार वही सो वही इनिशियली तो मैं काफी स्केप्टिकल था, बट देन व्हेन आई कि आप लोग हो भी ऐसे कि यू मेक पीपल फील वेरी इजी एंड काम. सो उस लिहाज से देखे तो क्योंकि लोग इतने कोऑपरेटिव थे, अकोमोडेटिंग थे कि समटाइम्स वो फियर चला जाता है. तो समहाउ एक बार वो फियर चला जाए तो एटलीस्ट half of the battle is won. Yeah. And then if you have someone like Nishita Ba as your co-host, तो और 25% वहाँ पे ही मैनेज हो जाता है. बाकी के 25% आप लोगों की एनर्जी ऐसी है और पूरी जो टीम लगी हुई थी, चाहे वो भास्कर दा हो या एंटायर टीम वो वर्किंग. तो उससे क्या हुआ कि somehow ये मैनेज हो गया आई गेस. और बाकी तो आप लोग कहेंगे और जनता कहेगी कि if I could do justice or not, but I enjoyed the whole process. It was a new experience for me. और बीच में तो डांस भी करा दिया आप लोगों ने. So I don't know how far I could do justice to that, but you did great. But I enjoyed, yeah. That's more important. Exactly, yeah. You're also an environment lover. Tell our audience about the association with Safe Deportable Project. सो एनवायरनमेंट लवर में मैं यही बताऊंगा कि पहली बात तो हमें ये समझनी है कि सी वी ऑल आर एट द वेरी कोर द चिल्ड्रन ऑफ आवर सॉइल, है ना. चाहे सो हमारी बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो भी हैं, लेकिन उससे ऊपर मैं रखूंगा द फैक्ट दैट हम लोग नेचर के संतान हैं, है ना. और जब वो चीज़ हम लोग रियलाइज करेंगे तब हम लोग को ये भी पता चलेगा कि हम भी नेचर हैं, है ना. एंड उस चीज़ को जब हम लोग एक्नॉलेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली विल अंडरस्टैंड कि जो नेचर के प्रति हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो ड्यूटी है, वो कभी भूलनी नहीं चाहिए. सो आई वोंट कॉल माई सेल्फ एन एनवायरमेंटलिस्ट, बट आई एम जस्ट अ चाइल्ड ऑफ दिस अर्थ. एंड आई फील कि अगर
मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है तो उस टाइम पे I'll have to be there for her no matter what, चाहे वो दीपोर बिल हो, दिहिंग पाटकाई हो, बागजान हो, मोलेम हो या फिर अमेज़ोन हो. So you know we have to be there for her at any point of time. So बस वही करते हैं. तो इसमें ऐसी नहीं कोई बात नहीं कि I'm doing something great or out of the box. It's just that being a son, it's my responsibility and I'm just doing it. Yeah. Wow, interesting. Tell us something about your dating life. You don't talk much about that. हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा हो जाता है जिंदगी में. ये क्वेश्चन होना जरूरी है क्या? हाँ. Your social media is about work and ठीक है, nature, music. There's no love interest there. अभी तो ये रोल भी हो रहा है. हाँ. सही है. You're dating anyone right now? So right now I'm dating, I guess. You guess? Yeah, because it's on off चलते रहता है. That's there. Yeah, so I think I'm dating. You're dating. Since how long? It's been a while. And it's on and off. It sometimes disappears and then it again comes back. But somehow we have managed to stick to each other. Nice. Do you travel together? Not yet. Not yet. Yeah. You should. But yeah, I like being. I love my solitude when I'm traveling. So you prefer solo travel? Yeah. More. So far, yeah, it's mostly solo travels. Let's move on to our first fun segment. Sure. Never have I ever. We have the tea and coffee. Cool. Yeah. So you know the drill. If you have, you gotta drink. Take a sip. If you haven't, skip. वाह. ये तो बहुत complicated है जिंदगी का. Anyway, चलो. We have simple, easy questions. Easy. मतलब broader term में बहुत कुछ चीज हो सकते हैं. But anyway, yeah. Let's back to your questions. Okay. Have you ever been a people pleaser? I guess so. Would you want to share any story? So it means my nature is such, I end up pleasing people, but then I also think कि शायद कभी कभार just to accommodate people, I end up, saying yes a lot of times to a lot of things. So it's hard for you to say no. Yeah. Dated multiple partners at the same time. डेट ही नहीं किया है रे अच्छे से, तो multiple partners. That's a lie. अच्छे से डेट नहीं किया है, but yeah, I have dated, but not multiple partners for sure. Okay. Gotten high on drugs? I don't think I have tried drugs per se, but I was in a shoot in Arunachal, so then I tried their local wine, and it was fantastic, and it felt so good that I just kept laughing after that. Oh, nice. Yeah. फिर my director was also मतलब got tensed कि यार ऐसे अगर हंसते रहेगा तो scene कहाँ निकलेगा. So this is one time, and similarly again I had a similar situation in Arunachal only. So उस बार लेकिन मुझे मतलब it was a forceful kind of a thing क्योंकि एक ritual चल रहा था, तो उसमें भी similar. I don't know. Every time I try their मतलब wine, What I end wine up, is it? Yeah, kind of. Uh-huh. एक तो था रॉक्सी था और एक था most probably आपका it's more like apong kind of a thing. So मतलब मुझे बहुत हंसी आता है, I don't know why. I just feel like laughing out loud. मतलब so अच्छा है, लोगों के लिए अलग अलग नशाएं होते हैं, but So you're happier when you're drunk, basically. Yeah. That's a nice thing. Yeah, I enjoyed it. Yeah. Have you ever got cheated on, like? I don't know. वो तो दूसरा लोग ही कह पाएंगे. Like if you got to know, अगर आपको पता चला. Yes. I guess yeah. Do you want to share something? It's more to do with a kind of people. It's a collective kind of betrayal I felt, and I think I'm right also in that way. So
more to do with the kind of philosophy, and also so it's basically to do with me entering into some kind of politics when I was in university. Acha. And there were a few people who supported me during that process, and when I said that I don't want to align myself with your political agendas and ideology as a party, and I want to keep myself as an individual, and I want to take it forward as an independent kind of a person, then they tried to do certain things which really made me feel not just bad, but it really made me question कि आप अपने ideologies को कहाँ रखते हो when you get into politics, which is very sad. You know, politics is such a superficial thing. आप just बोलते हो about equality, आप बोलते हो about bridging gap, लेकिन ये सब बस दिखावा और बोली हुई बातें हैं. We were actually wanting to know if you have ever got cheated on a relationship. I've never been into a very committed relationship. Yeah, so उससे तो cheated का बाद आता ही नहीं है, और cheat किया भी होगा तो that's okay, क्या कर सकते हैं. That's okay. सबको आनंद मिलना चाहिए फिर जिंदगी में बस. Yeah. Have you ever faced non-interacting audience, like you perform live? So. Yeah, mostly you get interactive audience, non-interactive. But yeah, I mean, this is मैं सिप नहीं करने से भी शायद होगा, but there are some audience जिनके साथ मैं lately I have felt कि I don't connect too much. अच्छा. जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको बस once they are drunk, उनको बस एक किस्म के ही गाने चाहिए होता है, you know. So उस किस्म के audience को मैं cater नहीं कर पाता. अभी मुझे फील होता है. अच्छा. I feel very delusioned उस प्रकार के performances में. Yeah. अच्छा. Have you ever faced or experienced, I would say, depression? I don't know how to put it. Depression तो शायद नहीं है, I guess. But there was a string of moment जहाँ पे मैं I was deeply melancholic. जिसमें definitely there were traces of some kind of depression. But जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने emotions को या अपने state of mind को एक balanced place में या फिर space में रखने की कोशिश करता हूँ, more or less. लेकिन उस point में I was in a way क्या बोलूँ, I was lost. Yeah, I was lost. I was completely lost. और मुझे एक ऐसा point भी था जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, especially because वो experience was also associated with something that I love doing. एक तो था music और एक था documentation. अच्छा. So दोनों चीज़ों के प्रति ही मेरा बहुत ही प्रेम है और रुझान भी है, इसलिए उस चीज़ को लेके अगर मुझे कुछ इस प्रकार के चीज़ें महसूस हो रहे हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, so definitely it's a very painful kind of a thing. But this whole process also had its own kind of lessons and also in a way कैसे बताऊँ, so वो process में I was in UP. अच्छा. And I was going through all this kind of an emotions और मुझे कुछ questions भी आ रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. तो the last point of our shoot was in वाराणसी. और फिर हम लोग अस्सी घाट में थे and we were taking a boat kind of a ride and it was a setting sun. एक तरफ आप मणिकर्णिका घाट में देख रहे हो कि चिताएं जल रही है, एक तरफ में आप देख रहे हो people are getting ready for the गंगा आरती and there's some people playing flute and then you मतलब शायद हर एक फेस की अपनी एक लर्निंग्स होती है, अनलर्निंग्स होती है और शायद उस समय पे अगर मुझे कुछ ऐसी एहसास हो भी रही थी, शायद it was for my own good, लेकिन शायद मैंने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि शायद am I getting depressed out of it. You couldn't understand what's happening with what you. Happened. So I cried at that point of time and that crying really cleansed my thoughts. Helped you. Yeah, absolutely. So how did you come out of it, like with time, like
आई थिंक इवेंचुअली वही, आई थिंक दैट फेज अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग को एक्सेप्ट करना होता है कुछ चीज़ों को. एक्सेप्टेंस इज द की टू एनी काइंड ऑफ मतलब किसी भी एब्सोल्युटली. तो उस पॉइंट पे एक्सेप्टेड माय सिचुएशन एंड आई आल्सो अंडरस्टूड कि शायद मैं इस चीज को लेके जैसे सोच रहा हूँ, अगर उस चीज को मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचूं तो यस. तो आई थिंक दैट हेल्प्ड. नाइस. हैव यू एवर hated companions on a road trip? Companions को hate करना road trip पे? Yeah, since you travel a lot. Most of my companions are really good. So I mostly travel with one of my very dear friend brother. His name is Arghadeep Talukdar. So I've never felt कि I've never hated his companionship so far, touch wood. And I feel the same कि वो भी शायद he feels the same. And also when we travel as a band or also as a film unit, it's always fun. So never, at least touch wood, अभी तक तो ऐसे experience नहीं हुई है so far. All my trips have been very interesting so far. Nice. Have you ever dated somebody from the same sex? Same sex तो नहीं यार, अभी तक तो नहीं. अभी तक तो नहीं. Nice. So yeah, that's all about Never Have I Ever. Cool यार, बहुत अच्छे तरीके से चला गया. और एक मैं सिप ले लेता हूँ तब तक. हाँ please. बहुत बढ़िया. Tell us about your movie Armies. How did that happen? तो वो हुआ ऐसे. So basically I did a fellowship from an initiative or an institute called Green Hub. So Green Hub basically क्या करती हैं, अभी तो Green Hub दो जगहों में, एक Green Hub Central है और एक है Green Hub North East. So Green Hub North East में क्या होता है कि North East के 20 इंडिविजुअल्स को चुना जाता है एंड देन उनको ट्रेन किया जाता है वाइल्ड लाइफ एंड कम्युनिटी बेस्ड फिल्म मेकिंग में. सो एक 3 महीने का प्रोग्राम होता है जिसमें पहले तो आपको ट्रेन किया जाता है एंड देन 9 महीने का आपका एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. सो आफ्टर आई कंप्लीटेड माय फेलोशिप फ्रॉम ग्रीन हब, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ माय मेंटोर्स. हिज नेम इज नितिन दास. सो ही वाज वर्किंग ऑन अ फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन द पावर ऑफ नेचर, how nature helps us heal. And there is a thing called Shinrin Yoko. It's a Japanese concept of forest bathing. तो उसी चीज़ को लेके he was doing a film called India's Healing Forest. अच्छा, here in Assam? So it is a pan-India kind of a film. तो अलग-अलग जगहों में शूट किया गया है. अच्छा. तो I went to him and I stayed with him in Gurgaon. I was shooting with him for his documentary and he was also mentoring me in the same process. But उसी के पहले I did a music video for a friend of mine. Her name is कादम्बरी कश्यप. So शंकुराज कुंवर का एक गाना आया हुआ था कीबे डोनाते. अच्छा. So कीबे डोनाते का जो वीडियो था तो उसमें initially my friend was thinking of casting another friend of ours. His name is Nilin. He's a very I would say famous and a very interesting artist. लेकिन कुछ कारणवश वो कर नहीं पाया. So she was looking for a long-haired guy. And she said कि यार तू तो free ही है तो why don't you just come? There's nothing much to do because it's basically a dead man. हाँ, तुमको बस ऐसे ही सो के रहना है एक फील्ड में और कभी कभार 2-3 बार वो वॉक करने बोलेगी तो वॉक करना है एंड देयर विल बी सम प्रोजेक्शन हैपनिंग. तो बस यही करना है. तो इतना तो कर ही लेंगे, दोस्त के लिए इतना अगर नहीं करेंगे तो वैसे आई डिड दैट वीडियो एंड आई लेफ्ट फॉर माय मतलब फॉर माय मेंटोर्स फिल्म. ठीक है. बट फिर क्या हुआ कि मीनवाइल आई थिंक भास्कर दा भी मतलब द टीम वाज आल्सो ऑडिशनिंग फॉर द कैरेक्टर सुमन. एंड समहाउ उन लोग को शायद मिल नहीं रहा था वो लोग जैसे सोच रहे थे कैरेक्टर को. एंड आई बिलीव इन सिरेंडिपिटी कि मतलब मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है कि
there had been a lot of events serendipitously happening to me. So उसी प्रकार से I think जो हमारी casting director थे रोनाल्ड भैया, then our AD Khunana Dotto and Bhaskar da, all of them were in different places. लेकिन interestingly same time पे ही वो लोग की बेदोनाते का वीडियो देख रहे थे and unanimously all of them thought कि मतलब शायद सुमन यही होना चाहिए. अच्छा. And that's when they contact me, but I was not ready again. And then I told them कि I'm a film student, I'm a film lover. Yeah. And I strongly feel कि इतनी अच्छी आपकी स्क्रिप्ट है तो इसमें आपको चांस नहीं लेना चाहिए. You know, especially with one of the important characters of the film. Yeah. Who is also in a way story को आगे ले जा रहा है, तो I think it won't be in a way safe and also right for मेरी तरफ से भी, because as a film student मैं भी नहीं चाहूँगा कि इतनी अच्छी एक स्क्रिप्ट को मैं spoil करूँ just because I'm getting an opportunity to act. And acting has never been in my bucket list also. कि एक्टर बनना है कभी, वो था ही नहीं. अच्छा. तो पहले तो मैंने उन्हें यही बताया कि मैं एक काम में ऑलरेडी हूँ और ऐसे बीच राह में उनको छोड़ जाना भी सही नहीं है. एंड एज अ फिल्म स्टूडेंट ऑल्सो आई फील कि ये फिल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी दमदार है, काफ़ी अच्छी है, आपको एक प्रोफेशनल को लेके करनी चाहिए. बट पहली कन्वर्सेशन तो वैसी गई, बट देन फिर से वो लोग बात किए एंड देन I also talked to my mentor. They also had a video session with me and my mentor was also very accommodating. वो भी एकदम शांत किस्म के आदमी है. अच्छा. हाँ, तो वो बोला कोई बात नहीं, तुझे अगर लगता है तो तू चला जा. अच्छा. तो मैंने उनको बोला कि सर फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं. But then what happened is like भास्कर दा ने बोला कि there is this I mean सीमा मैम is in town, दिल्ली में है वो, तो why don't you go and meet her once and then we'll take it forward. तो मुझे लगा कि again being a fan of सीमा विश्वास मैम, I thought कि ये मेरे लिए opportunity, चाहे film करूँ ना करूँ, you hardly get a chance to you know meet someone like सीमा विश्वास मैम. So मैंने कहा कि ठीक है ये कर लेता हूँ. So मैंने गया, so उन्होंने पहले मुझे मालवीय नगर में बुलाया. उस दिन विद्या दी भी थी, उनकी जो बहन है. अच्छा. So जैसे कुछ उन लोगों का काम था वो किया, then I went to सीमा मैम्स मेंटोर्स प्लेस, उनके साथ ही. उस दिन दौलत वैद सर भी थे. सो उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन किया, he asked me to tell a story. So I told my favorite story जो मुझे मेरी नानी सुनाया करती थी. तो she liked it also. then कुछ फोटोज खींची and then said कि ओके कुछ होता है तो मैं बताऊँगी. वो चलो ठीक है. then I came back. बट उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद कॉल आता है कि नहीं नाउ दे आर लाइक कि नहीं तुमको ही चाहिए. फिर अभी क्या कर सकते, इतने बोल भी रहे हैं. एंड वी आर सपोज टू गो फॉर अनदर शूट इन एमपी विद माय मेंटोर. अच्छा. 2 दिन में. सो वी हैड टू डिसाइड ऑल्सो कि क्या करना है. सो देन मैं फिर से भास्कर दा को बोला कि अगर आप लेना चाहते ही हो तो आई थिंक यू डिसाइड ओनली आफ्टर द वर्कशॉप. सो उन्होंने कहा कि देयर विल बी अ काइंड ऑफ अ मंथ लॉन्ग वर्कशॉप विद सीमा विश्वास मैम, एक्टिंग वर्कशॉप. तो वो वर्कशॉप करेंगे फिर विल स्टार्ट शूटिंग. से मैंने बोला कि आप पहले वर्कशॉप कर लो. अगर वर्कशॉप के बाद आपको लगता है कि आई कैन डू इट, देन यू टेक द कॉल. एंड दैट्स हाउ. या अच्छा. सो यू डिड अ 1 month training, kind of 1 month training. Then we also, to familiarize myself with the whole idea of living in Guwahati University's hostel, we stayed there for kind of almost 2 weeks. Understand the nuance and the whole process. So वैसे ही start हुआ. And that's how Amit's journey happened. Are there any upcoming projects that you're working on? So there are few films that I was part of last year. Yeah. But I don't know whether they will be released or not. So there's one film that I did with Monju Bora Jathai. So that's one film. I did a Gujarati film. Oh. Yeah. Wow. How did that happen? Again, the stars aligned. Yeah, more to do like that, and it's a very interesting film. And I really owe a lot to this film because there was a point
उस फिल्म से पहले जब आई ऑल्सो फेल्ट कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इज एक्टिंग समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू, बिकॉज विद आमिस अगेन प्रोसेस ऐसा था कि भास्कर दा पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे थे, मैं भी जानने की कोशिश कर रहा था कि कैसे करना यू है। फील दैट होल कैथारसिस ऑफ क्योंकि अभी मैं तो अर्घो हूँ एंड देन सुमन इज अ डिफरेंट कैरेक्टर, तो उस चीज़ के बीच की जो एक जर्नी है, तो क्योंकि मैं सीखा हुआ नहीं हूँ राइट, तो एक पॉइंट में मुझे लग रहा था कि मेरे कैरेक्टर्स भी काफ़ी मोनोटोनस बनते जा रहे थे, और ऑल्सो द काइंड ऑफ मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, टू बी रियली ऑनेस्ट। बहुत ही हम लोग अखबार में अघ्यामी बोलते हैं, तो एक उस प्रकार के ही कैरेक्टर्स आ रहे थे, रोल्स आ रहे थे, सो मतलब एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था और कुछ सीख नहीं पा रहा था। राइट, जैसे भी डॉक्यूमेंट्रीज हम बना रहे थे, एवरी डे नए नए जगहों में जा रहे हैं, नए नए लोग से मिल रहे हैं, नए नए फिलोसफी सीख रहे हैं, नए नए कैमरा टेक्निक सीख रहे हैं, नए नए साउंड की चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन एक्टिंग में मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। जिनके साथ भी काम कर रहे थे समहाउ मुझे वो कनेक्शन नहीं मिल रहा था, सो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी था उस पॉइंट में। एंड देन आई ऑल्सो टुक ऑनलाइन वर्कशॉप, एंड देन जब वो गुजरात वाली फिल्म करने गया तो वहाँ पे काफ़ी लोगों से मिला। सो वन ऑफ द एक्टर्स वर ऑल्सो, आई थिंक हैव इफ यू हैव वॉच्ड ओम दरबदर बाय कमल स्वरूप सर, okay, then you must have watched Lagan. Yes. So Lagan में who played the role of Kachra? I don't remember. Yeah, so Kachra, and even he was in Jo Jeeta Wahi Sikandar. So there were many good actors in that film. Acha, I mean these are big films. Yeah. So there's Amrita Bakshi, so she's also an amazing actress. And there's this actress named Diksha Joshi. So meeting them was a very enlightening experience. Of course. Yeah, how they approach. Also, all the camera persons, I mean the DOPs, they also had their own stories to tell. हम लोग एक साथ रुके हुए थे, तो उनकी भी जो जर्नी थी, कैसे स्टोरी को देखते, the director herself, because it's a very personal story. अच्छा. Yeah, of her, because it's a story of her and her father's journey, and a lot of things happened in that process. So उन सब चीज़ों को जब एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप देखते हो, फील करते हो, सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फील द कैरेक्टर, जो शायद मैं मिस कर रहा था इससे पहले कुछ कामों में, एंड इन सबसे मिलके बेसिकली। या एग्जैक्टली, सो जो जिस स्पेस में भी हम लोग थे, सो मेरे लिए एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, एंड आई फील कि अभी जो मैं काम करूँगा उसके बाद I will try to incorporate all those ideas and basically to the fact of surrendering to this medium. Nice. So एक तो ये है. Yeah. And there's another film that I did by the fall of last year. तो शायद वो भी Guwahati Diaries. Guwahati Diaries तो रिलीज हो गई. अच्छा. वो तो काफी पहले ही की हुई थी। वो हो गई, वही मैं बोल रही थी। बाय द फॉल ऑफ लास्ट ईयर आई थिंक वो तभी रिलीज हुई थी। रिलीज तो हुई थी वो, आई थिंक बाय जुलाई लास्ट ईयर को रिलीज हुई। अच्छा। तो हाँ, फिलहाल तो यही है, और आई एम आल्सो इनटू डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, तो वो चल रही है, एंड देयर इज अ प्रोजेक्ट आई एम इन्वॉल्व विद कॉल्ड द रिवर प्रोजेक्ट। सो उनकी हमारी प्रोजेक्ट की भी कुछ कामें हैं। अच्छा। तो बेसिकली वो सब चीज़ें चल रही है, और आई एम ऑल्सो वर्किंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन स्क्रिप्ट, सो होपफुली by the end of this year we'll start shooting. So I'm not working there as an actor, but more as an associate director. Yeah. Acha. So are you also looking at working in Bollywood? I mean, I would love to. I mean, I would love to explore. You know, it's कैसे, मतलब अगर कमर्शियल पर्सपेक्टिव से भी देखें और इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इट्स द पिनकल एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, राइट? सो डेफिनेटली एक काम करने की इच्छा तो डेफिनेटली है कुछ लोगों के साथ जिनके काम आपको रुझाते हैं, या फिर जिनके काम से आप इंस्पायर होते हैं। सो देयर आर मेनी डायरेक्टर्स फॉर दैट मैटर, लाइक अनुराग कश्यप. I'm a big time fan of Anand Gandhi. And Motwane ji is there. You know, Sriram Raghavan. So
and people like Imtiaz Ali, you know, there are really Yeah. some amazing directors, and especially new bunch of people who are also making film. There's this amazing director named Achal Mishra. So इस प्रकार के जोन पे काम करने की तो इच्छा है, मतलब from an actor's perspective. Yeah. And also touch wood, inshallah, अगर कभी मौका मिले तो would love to make a film With in them. Bollywood, no? Yeah, sometimes, yeah. Nice. So yeah, let's hop on to our Next segment. Yeah, this or that. We'll give you two options. You gotta choose one. This, that. Yeah. Cool. Okay, first is wine or tea? Tea. Tea. Music or acting? Music. Music? Oh, that's your first love. Yeah, that's my soul food. Yeah. Nice. Long hair or short hair? Long Since hair. you have long curly hair. Yeah, long, absolutely long hair. Nice. Rich and famous or rich and unknown? Rich and unknown. Yeah. क्योंकि ऑप्शन में रिच तो है ही कॉमन. Yeah. So रिच को रखना ही पड़ेगा. Right. But yeah. Okay. Suman from Amis or Mayur from Guwahati Diaries? Suman. Why? Yeah, पहली फिल्म है, and also the whole idea. I mean the whole experience. I mean it's uncomparable. You know, compare करना भी गलत होगा. I have utmost respect for Mayur also. Yeah. But पहली फिल्म की अपनी, but anything that's It's more first, close to your heart, absolutely. of The whole course. process also is more honest and authentic, I believe. Nice. First experience. Yeah. Vacation or staycation? Staycation क्या होता है? पहले वो Like, you समझा. know, weekend getaway kind of thing. हाँ. Like, yeah, go to a nice property or, you know, camping, 2 days. Oh, you vacation, stay. vacation, अरे vacation. Yeah, that staycation starts and ends like quickly. Yeah. Property में मैं क्या ही करूँगा यार. Anyway, हाँ. Next question. Okay. So, yeah. Relationships or casual hookups? Relationship. Relationship. Yeah, now you'll say that. ये hookups में रखा ही क्या है यार. Hookups anyway, it will, मतलब उसमें कुछ spiritual gain नहीं होगा. Right. Second chances in life or no chance? Like, I've been getting a lot of second chances in my life, so I'm always humbled for that. So definitely, I'm thankful to the universe and also to all the people who have given me second chances. nice. That's about it. Yeah. Before we conclude, Okay. tell us one quote you swear by. I really like this quote by David Attenborough, who says that if you really wish to protect something, you'll have to care for it, and to care for it, you have to experience it. You know, so if you really wish to protect our environment or Mother Nature or anything, to protect ourselves, first of all, we have to experience ourselves in the truest form. हम लोग खुद को कितना ही जानते हैं, है ना? Wow, deep. Thank you, Argha. Thank It you, was thank you, lovely thank chatting with you. The feeling is mutual. Thank you. Thank you. Thank you for watching the episode. If you liked the episode, please like, share, and comment down whom do you want our next guest to be. Till then, take care. We'll see you next week.